में सेंट एडमंड स्कूल के जो बच्चे हैं इनका क्रिएशन देखने को मिला। बेहतरीन क्रिएशन है और इंस्पिरेशंस भी बहुत बड़े कई आर्टिस्टों को इन्होंने लिए हैं। बाकी खुद का अपना क्रिएशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कलर सिलेक्शन बहुत प्यारा है, कंपोजिशन जो सेट किया बहुत अच्छा लग रहा है और मोस्टली अपना खुद का क्रिएशन नज़र आ रहा है। बस उम्मीद यही है कि आप अपना क्रिएशन ऑनेस्टली उसको टाइम देते जाइए, करते जाइए और जो आप हैं वो उस पेंटिंग में, स्कल्पचर में, अपने क्रिएशन में नज़र आए। आज अगर यहाँ देखा तो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी आर्ट गैलरी में अगर वो क्रिएशन देखने को मिलता है तो तुरंत क्लिक करे दिमाग को कि हाँ ये उस आर्टिस्ट का काम है, तो फिर बात बनेगी ना। वो सब कंट्रीब्यूशन एक इम्पोर्टेंट है ना। अपने कला जगत बहुत बड़ा है, तो अपने आप को टटोलिए वेस्टर्न आर्ट में क्या हो रहा है, इंडियन आर्ट में क्या है, फिर हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ा ध्यान में भी लेके जाइए और वो चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए। टेक्निक्स, कलर सिलेक्शन, कंपोजिशन, क्रिएशन जो आप हैं वो उसके साथ बनाएं। So today I'm in an art gallery Parijat at Jawahar Kala Kendra. So we are in the euphoria. So this whole world which is full of colors, full of forms, textures, elements. It's really giving. It's really convincing a sense of a euphoria for us. And I would like to congratulate all the students, all the participants of this exhibition. And all the artworks are very different from each other. There is a mythology, there is a nature, there is a depiction of you can see the depiction of a perspective. There are forms, elements, textures are everywhere. So once again I would like to congratulate all the students, all the staff of St. Edmunds School, and some artworks are outstanding. In the complete sense of composition, in the sense of perspective. So my good wishes, my great wishes to all the students, all the faculty members, and the staff of this St. Edmunds School. So thank you so much. Absolutely amazing. I mean, I never expected. I was just actually showing JKK to my friends, and then I saw this work, and then I came in. It's, I think, incredible what you students have done. It's outstanding work. What kind of theme you just prefer? Like, what do you like the most? See, there is so much for me to imbibe right now. There is all kinds of themes here, but I think each one is an outstanding thing, looking at the age of the kids and how they've gone about it. But I especially love the graphic quality. The people who have done abstracts and the graphic quality, fantastically done. I think amazing work. Amazing work. You wanna be